I like stunning, I like shining, I like... Hi guys, welcome back to my channel, The Beautiful Boss. So I am Aditi and in today's video I will show you my Jabong haul. It's kind of a mini haul actually. मैंने recently Jabong से जो सबसे बड़ी सेल चल रही थी उस टाइम पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए. मैंने जनरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं. सो आई विल शो यू इन माय वीडियो कि कौन से प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं एंड मैं आपको मेकअप करके भी बताऊंगी कि कैसे मैंने यूज़ किए हैं. बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So let's get started. I always clean my face before doing any makeup, right? I always apply a toner before applying anything on my face. I will start my makeup with this foundation. It's a serum. Let's see. ब्यूटी ब्लेंडर तो अच्छे से ब्लेंड हो गया है. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माय कंसीलर. दिस इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Jeffree Star. ही इज माय क्वीन. आई शुड ऑल्सो यूज दिस कंसीलर. This is full coverage concealer. Tap 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 tap. So the next product is this. So this is the product and इसके पीछे एक मिरर भी है. मुझे इसके पीछे ये चीज़ लाइक मिरर ऐसे अच्छी नहीं लगी. Cause you know हमें ऐसे बार बार उठा के कौन मिरर यूज़ करता है यार. बार बार ऐसे उठा के यहाँ पे एक मिरर होना चाहिए. एक बार बार ऐसे ठीक है. दिस इज़ फाइन इसको रखने के लिए. ओके आई विल प्रेस इट. मैंने आईब्रोज तो बनाई नहीं. आई विल बी यूजिंग दिस. सो इसमें एक ट्वीज़र है एंड इसमें एक स्पूली भी है और ये ब्रश भी है. सो लेट्स सी how it works. This is like powder highlight. इसमें लिखा हुआ है powder highlight wax. I don't know आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं. So let's see. As मेरी brows इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, आप इसे मेकअप लाइक अप्लाई करने से पहले भी लगा सकते हो. मैंने बाद में लगा लिया cause I was very excited to apply the concealer and the foundation. So this shade. Okay, even you can use this for your contouring if you want. For eyeshadow I will be using this because मैं आज सिर्फ Jabong के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी. फाइन. अगेन मैं कुछ ना कुछ गिराती रहती हूँ. नाउ वैक्स. वैक्स से आपके बाल सारे सेट हो जाएंगे. मैंने ये शेड अपने आई शैडो में लगाया है. अब मैं इससे कंटूरिंग करूँगी. My contouring is done. Next product is, where is my eyeliner? So this is eyeliner. I will be using this. इसका ब्रश ऐसा है. हमेशा आपकी आईज यहाँ पे जो ये मिड है ना, इसके बीचों बीच से ऐसे लीजिए. Make it like this. मैं lashes लगाऊंगी. So I will be using a mascara. I will be using this as in for lashes. This gives you a natural look. मेरे lashes already कम है, so मैंने ये मंगवाया है. Let's see.
So I should use a light lipstick or a dark lipstick. Let me use a dark lipstick. This is a Jabong. Okay. Highlighter के लिए I will be using a Essence highlighter. ये ज़्यादा महंगा नहीं आता. जिनकी नाक मेरी जैसे छोटी है वो यहाँ पे लगाएं. On your cupid. I will be using this lipstick क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लगा है मिलाने की. This is a more matte. And next I will be using a highlighter like this. So this is my makeup. और मैं कुछ अलग इसलिए नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे हैं. This is the final look guys, so please comment in the comment section कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा. And don't forget to buy all these products from Jabong. अब तो सेल है नहीं, but next time अगर सेल आएगी तो please do it. I really like the products. I like the concealer and the foundation. And अगर आपको भी अच्छे लगे हैं तो you can buy it from Jabong. And don't forget to comment on my comment section कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा. And don't forget to like the video and share the video. Thanks for watching. Bye. Take care.